नमस्कार। संडे का दिन 17 नवंबर और आज हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स के ऊपर। देयर इज़ लॉट ऑफ टाइप ऑफ रिटर्न्स जो आप देखते हैं। आप चाहे फैक्ट शीट पढ़ लें या किसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में जाके चेक करें तो दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स। बी एट कभी आप देखोगे CAGR रिटर्न्स है, कभी देखोगे ट्रेलिंग रिटर्न्स है, कभी देखोगे रोलिंग रिटर्न्स है, कभी देखोगे कैलेंडर रिटर्न्स है, कभी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। सो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ CAGR रिटर्न्स, ट्रेलिंग रिटर्न्स, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स एंड कैलेंडर रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। एंड रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर एक वीडियो आएगी मे बी नेक्स्ट वीक, एंड SIP रिटर्न्स ऑल्सो मे बी नेक्स्ट वीक। सो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज CAGR रिटर्न्स। और CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है तो बहुत सिंपल है। सो लेट अस टॉक अबाउट ट्रेलिंग रिटर्न्स या पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। सो आई वुड लाइक टू टेल यू ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं। अंडरलाइंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट दीज रिटर्न्स इज सेम, बी इट फॉर CAGR रिटर्न्स, बी इट फॉर कैलेंडर रिटर्न्स, बी इट फॉर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। वॉट इट मीन्स इज कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक क्या रिटर्न है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 ईयर का रिटर्न चाहिए। ओके, सो आज है से 17 नवंबर, ओके 24 से आपको चाहिए 1 ईयर ट्रेलिंग मतलब एक साल पहले का रिटर्न। तो उसको बोल देते हैं ट्रेलिंग रिटर्न, विच इज़ फ्रॉम नवंबर 17 नवंबर 23 से लेकर 17 नवंबर 24। ओके, सो दिस इज 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न। ऐसे ही 3 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न्स होता है, 5 ईयर्स, जो एक टाइम फ्रेम सेट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स। सेम फॉर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। पॉइंट टू पॉइंट मतलब पॉइंट A से लेकर पॉइंट B विच इज़ एज ऑफ डेट टुडे, या कोई भी पॉइंट A से लेकर पॉइंट B के बीच में जो रिटर्न है उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। एंड हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इज point to point return and trailing return is using CAGR formula. So for example 17 नवंबर 2023 को किसी चीज़ की वैल्यू 200 थी, ओके, एंड आज इसी चीज़ की वैल्यू है 500। तो what is the CAGR return out here? Okay, so let me just clarify one thing. अगर डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज डेट्स इज 1 ईयर तो CAGR रिटर्न को ऑल्सो विल बी इक्वल टू द एनुअल रिटर्न, ओके, विच इज़ वन ईयर रिटर्न। तो अगर जनरली दे से कि ये एनुअल रिटर्न है तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन द डिफरेंस इज 1 ईयर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनुअल रिटर्न। एंड नंबर 2, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ value as on today divided by value 1 year back raised to the power 1 by time duration is 1 minus 1। यही चीज़ हम परसेंटेज फॉर्म में देखें तो एनुअलाइज्ड रिटर्न इज दी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी एनुअलाइज्ड रिटर्न इज 150% in 1 year. Now say supposing you have instead of 2023 this is the value in 2022, okay, अब CAGR रिटर्न क्या होगा इसका सिंपल, लेट्स in out here the formula would be same, 500 divided by 200 raised to the power 1 divided by time. Time out here is 2 years, and why we are doing -1, we are just calculating the percentage out here, which is 58%. So
in 2 years, if something is 200 rupees, becomes 500 rupees, the CAGR returns in this case would be 58%. Mind you, अब इसको हम annualized returns नहीं बोलेंगे. Now this is called a CAGR return. Okay, and we can also call it a 2-year trailing return. Okay, and we can also call it a point-to-point return between 17th November 2024 and 17th November 2022. तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न हो गया. नाउ आज की इस वीडियो में स्पेशली वील टॉक अबाउट वन very popular index, which is Nifty Microcap 250 index, which invests in the stocks from 500 to 750 in terms of the market capitalization. Okay, तो माइक्रो कैप इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एज ऑफ डेट सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, विच इज़ मोतीलाल ओसवाल्स माइक्रो कैप 250 इंडेक्स. Okay, so now we want to calculate this data, which is point-to-point returns, trailing returns, CAGR returns of the Nifty Microcap 250 index. जो मोतीलाल का म्यूचुअल फंड है, ये एक्चुअली लॉन्च कब हुआ था आप खुद ही देखिए. ये अभी आई थिंक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, मे बी 1 year अगो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ. बट इसका अंडरलाइंग इंडेक्स क्या है? इसका अंडरलाइंग इंडेक्स है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स. इसका डेटा हमारे पास अप्रैल 2005 ऑनवर्ड्स अवेलेबल है. ओके, दिस गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस कि जो अप्रैल 2005 ऑनवर्ड्स से जो डेटा अवेलेबल है, वी कैन कैलकुलेट द पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, CAGR रिटर्न्स and trailing returns, whatever you want of this index as an example in this video. Okay, तो ये जो डेटा है इसका सोर्स क्या है? नंबर 1 सोर्स है, अगर आपको भी ये डेटा ये खुद से कैलकुलेट करना है, विच आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी कैलकुलेशन है अगर आप एक्सेल में आप खुद से कर रहे हैं, इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस एंड इट गिव्स यू मोर कन्विक्शन टू इन्वेस्ट इन दैट index, invest in that mutual fund, invest in that stock, whatever it may be. So अगर आप खुद से कैलकुलेशन कर रहे हैं, खुद से जो फिगर्स आ रही हैं, you will have more conviction in investing at the market, in the market whenever there is drawdowns, and you'll feel more confidence that maybe you've done calculation, back tested it, you've calculated returns for a very long period. सो उससे आपको कन्विक्शन आएगा कि इतने पीरियड पहले से अगर कोई भी चीज़ इसका रिटर्न इतना हो सकता है, सो मे बी इन द फ्यूचर, गोइंग फ्यूचर, इट मे गिव अ सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न. सो ऑल्दो आई एम नॉट गिविंग एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन दिस वीडियो, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू गेट मोर कन्विक्शन इन योर ट्रेडिंग. Okay, so you will get more conviction only when you do these calculations at your own. Okay, so let us go to the source of this data, which is niftyindices.com. तो यहाँ पे हम यही वेबसाइट में जाते हैं, and I'll tell you how you can get this data of to calculate all this data. We need to calculate using the first, this is the website, this is how it looks. Over here you need to select an index. So we will select equity index. Out here we want what kind of data you want. We want not the, by default यहाँ पे historical index data आता है. We do not want that because in the historical index data it gives the values basis the price returns, and हमें to calculate any kind of return you need to use the total returns index values. इसका difference देख लेते हैं just for our information. Price returns versus total returns. Okay, so price return measures the performance of an asset by tracking the price changes only, whereas total returns measures the performance of an asset by including changes and any income generated. So income generated, for example, dividends, interest and other distributions. For example, अगर
ये माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के अंदर किसी स्टॉक ने डिविडेंड या कुछ दिया है, तो वही डिविडेंड वापस से इसी इसी के अंदर री इन्वेस्ट हो जाता है एंड इट गेट्स एडेड अप टू गेट अ टोटल रिटर्न्स इंडेक्स, वेयर एज इन द प्राइस रिटर्न्स इट the dividend interest, all this is excluded. So it is best to use the total returns index. Coming back to this NSE website, let us select index type as equity and we will select the index as microcap 250. So this is a, in this website you get all the kind of indices, be it sectoral indices, be it broad market indices. Out here we are calculating this for a broad market index. So Nifty Microcap 250 index, you can select the time frame. और time frame के लिए मेरे को बस जो भी, we don't know when it started, so we'll just take it from the start since 1995 and let's see कि क्या data आता है. When you click submit, you can download this data in the CSV format. This is how you get the data. ये starting आपको पता चल जाएगा. Okay, so we had selected 1995. However, the inception date for this index, which is being maintained NSE indices website, is 1st April 2005, which is great. So we can actually calculate returns for around 20 years. Okay, 20 years का डेटा आपको मिल सकता है, and this kind of data that you are getting so easily on NSE indices website, you're not dependent on mutual fund houses to provide this data, or you're not dependent on some fact sheets to provide you this data. You can calculate it yourself. That's the beauty of Microsoft Excel, and I'll also show you, and we can also verify in this very video that how we are doing it. Okay, so ये मैंने पूरा डेटा डाउनलोड कर लिया था. I'll go back to this sheet. Okay, and how we are doing is we are just saying I've created the start dates, just written 1, 3. I just wanted this year this data for this index. So what I've done here is, say I want 31st October, that's my start date, and we want 1 year back, 3 year back, 5 year, 10 year, 15 year, and since inception क्या return है, trailing return क्या है. And how I'm getting this values, I've put simple VLOOKUP formula, this as the lookup value, E2 the date as the lookup value, and I've set this as the table array, which is containing 2 columns. Column 1 is the date, second is the total returns index values. And then I've just simply done a VLOOKUP calculation. VLOOKUP से क्या होता है कि मेरे को डायरेक्टली इस टेबल पे अगर जो भी मैं डेट डाल रहा हूँ, से 31st अक्टूबर, उस दिन पे क्या वैल्यू है उसकी इंडेक्स की मेरे को मिल जाएगी. So let's calculate the trailing returns. 1 year का trailing return, I've told you this is, we call it a annualized return. Okay, so 1 year का है 54.36% for this Nifty Microcap 250 index. Then 3 years का है, this is 3 years CAGR from 29 October, because data as of 30th and 31st may be holiday or not working, so that's why we've taken 29th October. So इसका फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूँ. So it is current value divided by the 3 year value 3 year back divided by 1 by G5, which is G5 is the time. Okay, so 3 years back minus 1, which gives us a CAGR value in percentage terms, which is amazing. So last 3 years में it has, this index alone has given a 36% return. So last 5 years में अगर आप देखिए 42.67% return, last 10 years में 23.21% return. Since inception return is from 1st April 2005, and hope this gives you more conviction in investing in this kind of an index. In terms of our here analysis out here is only basis the returns, which is CAGR analysis, so it is giving more conviction. Okay, now if as an exercise, if I say
इफ़ यू कंपेयर इट विद एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, आप चेक करिए लास्ट 5 years में कौन से एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने 42.67% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, which is active mutual funds, meaning that they have a fund manager, dedicated fund manager who is doing constant research. Out here, it's simple, a micro cap broad based market index, which is based on market cap. Okay, so out here it is simple, there is no, it's a passive index and there's no brain that is being applied by in terms of the fund manager. Okay, so it's just computer that is doing, rebalancing this index on a 6 monthly basis. So that is how this is working. So you check on a 10-year basis what all active mutual funds are able to beat this kind of a index, which is giving 23% return on a last 10-year basis. And there is lot, hope this video also, if you first of all, what I'm trying to do out here is I'm trying to do the interpretation based on this data that has been generated. Calculation सब कर लेंगे, but interpretation करना बहुत important होता है. What you kind of interpret out here. So out here you're interpreting that on a 10-year and a 15-year basis, this kind of an index has given more than 20% CAGR returns, which is amazing. Since inception returns, isme I feel because India is constantly growing, the kind of microcap indexes in year 2000, back in year 2005 versus the quality of those microcaps back in the current time in 2024, there's a huge difference. And that is what I feel, that microcaps in 2005 were way, in terms of resources and everything, if you see those companies versus companies today, there's a lot of difference. Versus you see the government in 2005 versus government, how powerful India has become in 2024. So in terms of companies, if you see from market capitalization 500 to till 750, many people feel it's very risky. Of course it is, a lot of risk is involved here, but if you see these kind of stocks have huge growth potential, and this index becomes favorable index to invest in on a long term basis. I'm not saying on a short term basis, that's why I'm talking about 15-year and 10-year returns out here. So on a long term basis it is a good return. And second interpretation I would like to give you is, hope this video is giving more clarity in terms of returns. So returns may I see a lot of videos, they say 1-year return, 5-year return, and nowhere on the slide it's mentioned what is the time frame of that return. Provide any inference from that kind of a data. You do not know what time frame that data is. So obviously you need to have more clarity on what is a return, what are the different kind of returns. Now अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, ट्रेलिंग रिटर्न्स, CAGR रिटर्न्स, एक और टाइप ऑफ रिटर्न होता है कैलेंडर रिटर्न्स. कैलेंडर रिटर्न्स बहुत ही सिंपल है. कैलेंडर रिटर्न्स एक काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स ऑल्सो एनुअलाइज्ड रिटर्न, कि इसमें हम 1 साल का रिटर्न लेते हैं. एंड कैसे ले रहे हैं, से 2023 का कैलेंडर रिटर्न हम ले रहे हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023. हमने बस इंडेक्स की वैल्यूज़ ली हैं, जैसे हमने लुकअप, इस टेबल के अंदर हमने लुकअप लगाया 1 जनवरी को क्या वैल्यू थी, 31 दिसंबर को क्या वैल्यू थी इंडेक्स की, हमने कैलेंडर रिटर्न्स निकाल लिए. Okay, this is not, you do not say that these are CAGR returns, these are annualized returns, of course. However, interpretation, you have to do interpretation. If you are getting this data, what is the interpretation? If you see on the last 10-year basis, there are 2 instances that the calendar returns of this index is negative, in negative territory, and that also minus 24% in 2019, year 2019, and these are 2 years in succession. Okay, that makes this a very, very volatile index.
Okay, people investing in during this time, they may have very few people maybe having the conviction to be stayed invested in the market at that time. So this is the kind of returns and the volatility that happens in the market. You need to understand that, and there is a lot of risk involved. You need to understand that as well before investing in any stock, any ETF, any mutual fund. Okay, so this is, and if you see how this index bounced back in 2020, it gave 37% return, and since then it is just been in the positive direction. So 37% in 2020, 76% in 2021, 10% in 2000, a modest 10% in 2022, and then 67% in 2023. Amazing. So now I've calculated this return. One more point I'd like to tell you is, if you go back to this source tab, there's a fact sheet. Okay, so if we see हमारे जो निफ्टी NSE इंडिया की वेबसाइट में भी, if you go to microcap 250 index, it's a mandate by NSE to release the fact sheet of these indices on a monthly basis. So अगर हम fact sheet से इसका रिटर्न चेक करें कि fact sheet में जो रिटर्न है और हमने जो कैलकुलेट किया है, why not let's do that, and basis that we can see if we have calculated the returns correctly. Okay, so we are going to this website. So यही वेबसाइट मैंने NSE इंडिया की यहाँ पे पेस्ट कर दी, एंड लेट्स गो टू दिस वेबसाइट एंड लेट्स काइंड ऑफ माइक्रोकैप 250 इंडेक्स की फैक्ट शीट हम डाउनलोड करना चाहेंगे. यहाँ पे you will see always you'll get the latest fact sheet. Somewhere in this website there's also a provision where you can download the historical fact sheets, so you can check that out. Out here if we see, let us calculate, let's see how the returns that we have calculated is basis the total returns. Okay, so 1 year return is 54.36%. Okay, 54.36%, that is fine. And 5 year return is 42.67. So we are seeing the total returns out here only. Okay, so 42.67. So this kind of, if we have done it ourselves, the calculation, it's so simple. We've just calculated in Excel, and that is the value you are seeing on the NSE website. So here we are kind of match it, and you see since inception we are also able to match that 19.12%. So if you're, what I'm trying to say is, if you're trying to do it yourself, you'll get that conviction. If you're not going to do it yourself, you're just plainly reading it, आपको उतनी conviction नहीं आएगी. As a beginner, as a starter, you have to learn to do it yourself. And hope this video provided you that clarity, and look forward to seeing more videos in this channel, Motivation Coach. And in the next video, please, if you are interested, please put it in the comments that you want to watch a video on the trailing returns and the SIP returns, how they are calculated, and on an Excel sheet, and so that you can get even more conviction in your trading. So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.